Haydi Allah aşkına. Yeni mi? Sektor mulai चेंज हो गया रोल बढ़ा बीन कानून के लिए करते रहते कुछ समझ नहीं आता। सब पिक निकालते हैं
जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada Guru Puja ki, Srila Prabhupada ki. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakate Sadma. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Bandamoni Savadhana Mate. Bandamoni Savadhana Mate. Yahara prasade bhai e bhabata riyaja. Yahara prasade bhai e bhabata riyaja. Krishna prapti hai yahan hai te. Krishna prapti hai yahan hai te. Guru Mukha Padma Vakya Chitte Ka Riya Aikya. Guru Mukha Padma Vakya Chitte Ka Riya Aikya. Arana ka riha mani asa. Arana ka riha mani asa. Sri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati. Sri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati.
ये प्रसादे पूरे सर्व आसा, ये प्रसादे पूरे सर्व आसा, चक्षुजान दिलो जही जन्म जन्मे प्रभु से, चक्षुजान दिलो जही जन्म जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या बिना सजाते, प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या बिना सजाते, वेद गाय यहाँ रचरिता, वेद गाय यहाँ रचरिता, गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकेनाथ लोकेरा जीवना, लोकेनाथ लोकेरा जीवना, आह प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया, आहा प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया, आहा प्रभु करो दया देखो मोरे पद छाया, आहा प्रभु करो दया देखो मोरे पद छाया, एवे या खुश त्रिभुवना, एवे या खुश त्रिभुवना, शिला प्रभुपाद पतिता पावना, शिला गुरुदेव पतिता पावना, जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद गुरु पूजा की, नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभु जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद बजाइए 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 छूट जाता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद जय अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Oh, Hari Bol, Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jayo Radha Madanmohan, Radha Madanmohan, Radhe Radha. Jayo Radha Damodar, Radha Damodar, Radhe. Jayo Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari, Radhe.
जयो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जयो राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताई 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 से सी गौरनिताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओ नीताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताई गौरा हरि बोल। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचरष्टोत्तरसत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचरष्टोत्तरसत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नवरी धाम की गंगा यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंद। Glories to assembled devotee. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotee. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga Gosala Prabhupada. The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can obtain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with a great awe and reverence. By his grace, one can cause all devotion and material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish to consciousness purified by the words of to lotus mouth. Attachment to lotus feet is the perfection, fulfills all desires. You open my darkened eyes, fills my heart with transcendent knowledge. He is my Lord birth after birth, from my ecstatic prema emanate, by me ignore and destroy. The Vedic scriptures sing up his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, friend of the poor Lord and master devotees. O Master, be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the world. Srila Prabhupada, we take shelter of your lotus feet. हरे कृष्णा। सब लोग बैठ जाएं। अभी दामोदर अष्टकम होगा। आज के दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे हिज ग्रेस सीता मोहन प्रभु। हिज ग्रेस सीता मोहन प्रभु की। श्री दामोदर अष्टकम की। नमामि सरा
सचिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुलव्राजमानो नमामि नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्राजमानो नमामीश्वरम् यशोदाभियो लोकालब्धावमानौ परमृष्टमात्यन्तदूतगोप्याय यशोदाभियो लोकालब्धावमानौ परमृष्टमात्यन्तदूतगोप्याय नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्राजमानो नमामि उदन्तमोहो नेत्रायुग्ममृजान्ता करभोजयोगमेन शतङ्कनेत्रा नमो रुदन्तमोहो नेत्रायुग्ममृजान्ता करभोजयोगमेन शतङ्कनेत्रा नमो मोहश्वासकाम्पतेरखाकण्ठा इतग्रैव दामोदरं भक्तिवद्या मोहश्वासकाम्पतेरखाकण्ठा इतग्रैव दामोदरं भक्तिवद्या नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्राजमानो नमामीश्वरां दृक्स्वलीलाभे आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तामख्यापयन्ता इति दृक्स्वलीलाभे आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तामख्यापयन्ता तदीयसितागेशो भक्तिर्जिता त्वा पुनः प्रेमतास्तां सतावृत्ति वन्दे तदीयसितागेशो भक्तिर्जिता त्वा
पुनः प्रेम तास्तां सता विधि बंधे हरे नमामि स्वरां सचेदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानो नमामि स्वरां परं देवमोक्षं न मोक्षमदीवा न चान्वीणया वरसादपीहारं देवमोक्ष परं देवमोक्षं न मोक्षमदीवा न चान्वीणया वरसादपीहारं देवमोक्ष इदं ते पूर्णता गोपाल बाल समे मनसा वीरसं किमने इदं ते पूर्णता गोपाल बाल समे मनसा वीरसं किमने नमामि स्वरां सचेदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानो नमामि स्वरां सचेदानन्दरूपा इदं ते मुखाम्भोजामतन्तनीले वृतं कुण्डलस्निग्धरक्तश्च गोप्या ते मुखाम्भोजा इदं ते मुखाम्भोजामतन्तनीले वृतं कुण्डलस्निग्धरक्तश्च गोप्या ते मुखाम्भोजा मोचुम्बितां बिम्बारक्ताधरां मे मनसा विरास्ताम् अलक्षलामे मोचुम्बितां बिम्बारक्ताधरां मे मनसा विरास्ताम् अलक्षलामे नमामि स्वरां सचेदानन्दरूपा सत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानो नमामि स्वरां नमो देव दामोदराय अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्ना देव दामोदर नमो देव दामोदराय अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्ना देव दामोदर कृपादृष्टे प्रेष्ठाते दीनवतानो गृहाणे समामे ज्ञामे दशि देशा
कृपादृष्टे प्रेष्याते दीनं बतानु क्रियाणे समामे ज्ञामे दसि देशा नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपा सत्कुण्डलं गोकुलव्रजबालं नमामि शरणं कुबेरात्मजो वदामुदैवयद्वा त्वमुचित भक्ति भजकित च कुबेरात्मजो कुबेरात्मजो वदामुदैवयद्वा त्वमुचित भक्ति भजकित च कुबेरात्मजो तथा प्रेम भक्ति स्वाकामे प्रयास न मुक्ते ग्रह में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वाकामे प्रयास न मोक्षे ग्रह में स्थित दामोदरे नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपा सत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानं नमामि शरणं नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने तदियोदरायता विश्वसधाम्ने सुधाम्ने नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने तदियोदरायता विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय तदया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तदया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपा सत्कुण्डलं गोकुलव्रजबालं नमामि शरणं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपा सत्कुण्डलं गोकुलव्रजबालं नमामि शरणं Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radhe. Jaya Radha Madanmohan, Radha Madanmohan, Radhe. Jaya Gauranidai, 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 Jaya Gauranidai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Gurudev. दामोदर आश्रम की जय। श्री दामोदर अष्टक सत्यव्रत मुनि के एक वार्ता में इसे नारद मुनि व सनक ऋषि को सुनाया था। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि द्वारा पद्म पुराण में रचित है। कार्तिक के महीने में मनुष्य को भगवान दामोदर की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदर अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ऐसा श्री हरि भक्ति विलास में बताया है। श्री दामोदर अष्टक का रूपांतर इस प्रकार है। मैं उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सामने नमन करता हूँ जिनके मकराकृत कुंडल आगे पीछे हिल रहे हैं, जो गोकुल धाम में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं, जो माता यशोदा के दही मथने के बर्तन के फूट जाने से डरे हुए हैं और जो माता के डरवश भाग रहे थे, परंतु जिन्हें माता यशोदा ने पकड़ ही लिया है। माता से डरने का कारण यह था कि दही मथने का बर्तन छीके से गिरकर फूट गया था। ऐसे दामोदर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ
माता यशोदा के हाथ में जलती हिलती छड़ी देखकर डरे हुए, जो अपने कर कमलों से अपने नेत्रों को बारंबार मल रहे हैं, शंख वलय की भांति जिनके कंठ की मोतियों की माला सुशोभित है, और रोने तथा जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण जो नीचे ऊपर उठ रही है, मैं उन भगवान दामोदर कृष्ण, जिनके पेट के चारों ओर रस्सी बंधी है और जो माता यशोदा के शुद्ध प्रेममयी भक्ति से बंध गए हैं, उनके सामने विनम्र प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की बाल लीलाओं को करते हुए वे गोकुल वासियों को आनंद के सागर में निमज्जित कर देते हैं, और इस प्रकार खोखले दार्शनिकों व ज्ञान मार्गियों की आंखें खोल रहे हैं कि वे सच्चे और प्रेमी भक्त से ही जीते जा सकते हैं। मैं सादर बारंबार दामोदर भगवान को शतशः प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यद्यपि आप सभी प्रकार के वरदान देने में सक्षम हैं, परंतु मैं निर्विशेष मुक्ति, वैकुंठ लोक में शाश्वत निवास की सर्वोच्च मुक्ति जैसे कोई वरदान नहीं चाहता हूँ। यहाँ तक कि मुझे आपके परमात्मा स्वरूप की अनुभूति की भी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि वृंदावन में निवास करने वाले गोपाल की मूर्ति सदा हृदय में बसती रहे। इसके अलावा दूसरे किसी वरदान का उपयोग ही क्या है। हे भगवान, आपके श्यामल मुखारविंद, जो काले रंग की लटों से सुशोभित हैं और माता यशोदा के द्वारा बारंबार चूमे जाने से बिंब फल की भांति लाल हो गया है, आपका यह स्वरूप हृदय में बसा रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। हे परमेश्वर, हे दामोदर, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हे अनंत, हे विष्णु, मुझ पर कृपा दृष्टि करें। मुझ मूढ़ का जो संसार के चिंता सागर में डूब रहा है, कृपया उद्धार करें और मुझे दर्शन दें। हे दामोदर, आपने बाल लीला में ही लकड़ी के उखल में स्वयं बंधे रहकर कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव और नलकूवर को नारद जी के शाप से मुक्त किया था। उसी प्रकार मुझे प्रेमा भक्ति प्रदान करें। मेरी केवल यही इच्छा है और कुछ नहीं। मुझे निराकार मुक्ति की तनिक भी परवाह नहीं, जो कि आपके प्रेम से रहित है। हे भगवान दामोदर, सर्वप्रथम मैं उस दिव्य रज्जू को जिसने आपको बांधा था प्रणाम करता हूँ। फिर मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूँ जिसमें विश्व समाया है। और फिर मैं आपकी प्रिय सहचरी राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। और पुनः सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको प्रणाम करता हूँ, जो अनंत लीलाएं प्रदर्शित करते रहते हैं। बोलो श्री श्री दामोदर अष्टक की जय। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। बोलो श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। बोलो शिला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। आज का श्रीमद् भागवतम की क्लास परम पूज्य सूरदास प्रभु जी के द्वारा दी जाएगी। बोलो सूरदास प्रभु जी की जय।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everybody's fine, fully fine, super fine. Oh wow, very good. That's wonderful to hear that you are super fine. So now we'll become transcendently fine by chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna Mataji. Wonderful. So let us chant the holy name together. This is the strength of all of us. हा असा कसा करता तुम्ही इसे मोबाईल चालू रखता है तुम्ही बंद करा तुम्ही एक घंटी बंद करा श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय निताई गौर सुंदर भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रजजनरंजना यशोदानंदना ब्रजजनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रजजनरंजना यशोदानंदना ब्रजजनरंजना यशोदानंदना ब्रजजनरंजना
यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदना व्रज जनरंजना यशोदनंदना व्रज जनरंजना यशोदनंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि हरि बोल everybody हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीबॉडी हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानी जय जय गौरानी जय गौरी जय गौरी Prabhupada Gurudev Jai Jai Prabhupada Gurudev Jai Vishnupad Paramahansa Pravachan Stotra Sat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vibhuti Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Namacharya Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Radha Kunsham Kulgiri Govardhana Ki Jai वृंदावन धाम की जय
मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, मायापुर नवदीप धाम की, गंगामय जमुनामय की, वृंददेव तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल प्रसाद वितरण प्रोग्राम की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga. Would like to welcome everybody this morning for a Bhagavatam class. Your endeavors in pursuing your spiritual life will take you away from the science and make you to go more towards spiritual life, make you go more towards the divine life. And as long as you're inquisitive in knowing the subject matter which transcends us from this material world to the spiritual world, your perfection is made in human life. And if that is missing, if that is missing, if that persuasion is missing, we'll come back again to material world, not knowing in which life, ant life, elephant life, dog's life, hog's life. The laws of karma are very, very strong. They are not governed by political leaders. They're governed by Supreme Personality of Godhead and his agents. There is no bribe there. There's no bribe. And it's absolutely perfect. Perfect as you see with your own eyes the nature changing the seasons. Correct? And if you can meditate on this metaphysical changes around your life, then only you will be able to understand who is the permanent master of these changes. That's why we have to transcend. And Lord is very, very compassionate. Just like a father is compassionate on his kutumba, his family, he endeavors from morning till evening hard to see that their subjects or his family is kept happy. Like that Supreme Father, who is Father of all the beings, is very much interested in us so that we can go back home, back to God. Spiritual world is 1/3, and the material world is only one portion of it. So you can understand that. So we'll continue to read today's verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Astu Prakritaya Proktas Traya Eva Hi Tadguna Vikara Sodasa Acharyam
पुमान एका समानवया अस्तु प्रकटया प्रोक्ता अस्तु प्रकृत्या प्रोक्ता त्रया एव हि तद्गुणा विकार षोडशाचार्य पुमानेक समान्वया अस्तु प्रकृत्या प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणा विकार षोडशाचार्य पुमानेक समान्वता पुमानेका समन्वया Mothers,
Word-to-word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Remain focused and understand the verse properly and the word-to-word translation also properly. Then it will be helping you to understand the complete verse and its flow. Astu 8. Prakartya, material energies. Prokta, it is said. Traya, 3. Eva, certainly. Ki, indeed. Tat guna, the modes of material energy. Vikara, transformations. Sodasa, 16. Acharya, by the authorities. Puman, the living entity. Eka, 1. Samanvayat, from conjunction. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The Lord's 8 separated material energies, the 3 modes of material nature, and the 16 transformation, the 11 senses and the 5 gross material elements like earth and water. Within all these, the one spiritual soul exists as the observer. Therefore, all the great acharyas have concluded that the individual soul is conditioned by these material elements. Kindly repeat after me so that you can understand translation very nicely. The Lord's 8 separated material energies, the 3 modes of material nature, and the 16 transformations. And these transformations are 11 senses and 5 gross material elements, like earth and water. Within all these, the one spiritual soul exists as the observer. Therefore, all the great acharyas have concluded that the individual soul is conditioned by these material elements. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. As explained in the previous verse, Kshetra Dehi Shutatma Yoge Adhyatma Vid Brahma Gatim Labe. A spiritually advanced person can understand how the spiritual particle exists within the body. And thus, by cultivating spiritual knowledge, he can attain perfection in spiritual life. The intelligent person who is expert in finding the self within the body must understand the 8 external energies which are listed in Bhagavad Gita. Bhumirapo nalo vayu khammano buddhire vacha ahankar ityam me binna prakriti astada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 comprise my separated material energies. Bhumi, earth, includes all the objects of sense perceptions, that is, Rupa, Rasa, Gandha, Sabda, and Sparsha. Within the earth are fragrances of roses, the taste of sweet fruit, and whatever else we want. As stated in the Srimad Bhagavatam 1.10.4, Sarvakama Duga Mahi, the earth, Mahi, contains all requirements. Thus, the objects of sense perception are all present in Bhumi, or the earth,
The gross material elements and the subtle material elements, those are mind, intelligence, and ahankara, false ego, constitute the total material energy. Within this total material energy are three material modes. They are satoguna, tamoguna, and rajoguna. But belong not to the soul but to the material energy. Hmm? It is because of interaction of these three material modes of nature that the five knowledge gathering senses and the five working senses and their controller, the mind and the mind, are manifested. Then, according to these modes, the living entity gets the opportunity to perform different types of karma with different types of knowledge, thinking, feeling, and willing. Thus, the bodily machine begins to work. This has all been properly analyzed in Sankhya Yoga, and Sankhya Yoga is elaborated by none other than the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Kapila Muni, in the Srimad Bhagavatam, Canto number 3. So, this is indicated here by the word Acharya. We need not follow anyone who is not an authorized Acharya. Acharyavan Purusho Veda. One can understand the truth fully when he has taken shelter of an expert Acharya. The living entity is individual, but the body is a composition of material elements. This is proved by the fact that as soon as the living entity quits his combination of material elements, it becomes a mere conglomeration of matter. The matter is qualitatively one, and the spiritual soul is qualitatively one with the Supreme. The Supreme is one, and the individual soul is one, but the individual soul is understood to be the master of the individual combination of the material energy, whereas the Supreme Lord is the controller of the total material energy. The living entity is the master of the particular body, and according to his activities, is subjected to different types of pains and pleasures. However, although the Supreme Person, the Paramatma, is also alone, he is present as an individual in all the different bodies. The material energy is in fact divided into 24 elements. The individual soul, the owner of the individual body, is a 25th subject, and above everything is Lord Vishnu or Paramatma, the supreme controller, who is 26th subject. When one understands all of these 26 subjects, he becomes Adhyatma Vit, an expert in understanding this distinction between matter and spirit. As stated in Bhagavad Gita 13.3, Kshetra Kshetragyor Jnanam, understanding of Kshetra, the constitution of the body, and of the individual soul and the super soul constitutes real jnana or knowledge. Unless one ultimately understands the Supreme Lord is eternally related with individual soul, one's knowledge is imperfect. This is confirmed in Bhagavad Gita 7:19. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapatite vasudeva sarvam iti samahatma sadurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes, and all that is such a great soul is very rare. Everything material and spiritual consists of various energies of Vasudeva, to whom the individual soul, the spiritual part of the Supreme Lord, is subordinate. Upon understanding this perfect knowledge,
one surrenders to the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadhurlava. Now you may consider that soul Sudhurlabha may be me, or you may think under any spell of illusion that you may be one of them. But we don't come among Sudhurlabha. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunitam Yenai Tasmai Shri Gurave Namah Namam Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Padayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namane, Gauradase Namo. Namo Brahmana Devaya, Go Brahmahitaya Cha, Jagatitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namo. He Krishna Karuna Sindhu, Deenabandhu Jagatpate, Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namo Sude. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sudadeve Pranamami Hari Priya. Vanchakalpadruvesya kripa sindhuvevacha Patidhanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. In continuation to this chapter, God learned in the womb is reflected in these wonderful verses, and I will take you back few verses because some of you have not been coming regularly to the Bhagavatam class. So connect at least few more verses at the back. We'll try to give some little gist of those verses which will denote what actually Prahlad Maharaj is teaching to the schoolmates. And this teaching doesn't happen out of the way. This teaching happens out of compassion. Any acharya, any guru in the past or in the future whose compassionate nature has aroused within him, he will try to extend this compassion to the fellow beings, family, nations, continents, and thus relieve materialistic people suffering in the material world without Krishna consciousness. So the purpose of evolving human life is to see that we
adhere to the instructions of the Supreme Personality of Godhead and make this journey very simple and sublime. And in this endeavor, if you have heard the proper instructions of a proper teacher in your life, there's a possibility that you will become one of wonderful devotees who can preach, become more dearer to Lord, because Lord says, who is very dear to me is one who preaches the message of Bhagavad Gita. He doesn't say one who has become scientist or who has become philosopher or he has become corporate head or who has got millions and dollars of rupees. No, he says the devotee who is preaching the Vedic knowledge, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Upanishad, Vedas to others becomes very dear to me. Chapter number 18, Krishna is concluding, who is dear devotee of mine? But he also reminds us in the chapter number 4 that you have to take this transcendental knowledge from a bona fide acharya. Tad vidhi pranipatena paraprashnena sevaya ubdikshantite jnanam jnanena tattva darshan. So he is saying that one who has heard this transcendental knowledge from a tattvadarshi, he will be able to understand it very, very nicely. Otherwise, it's very difficult. Now, why Prahlad Maharaj is so wonderful? He's Mahajan and he's very compassionate and he is, teaching to his schoolmates. Though they're all demons, and Prahlad was also a demon, but by the touch of Narad Muni, and that also in the womb, when he was in the womb, we were not so fortunate like Prahlad Maharaj. We may have got some sanskaras in our life at home, but we didn't get transcendental knowledge when we were just only 3 or 4 or 5. But my dear friends, when a child gets proper nurturing and he starts reciting the Bhagavad Gita, he is on the YouTube. Isn't it? People appreciate. Are bachcha, kitna अच्छा बोलता है भागवत गीता श्लोक और मैं बुढ़ा हो गया पैसा कमाते कमाते मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ गया. Isn't it? Before you become an embarrassing situation of the society or yourself, you take up to Krishna consciousness. Rather than getting glued to the television and seeing these dancing dolls and black cats delivering dialogues, and you make them your own idols. You make them idols of your life. Here, Prahlad Maharaj is saying, you don't have to make them idols of your life. You make me or the acharyas who is giving you transcendental knowledge. But I'm so dullard, I'm so inflicted by materialistic energy that I'm getting tossed morning and evening, and I cannot understand the subject matter which has to be learned. Komaram akya acharite prakyo, which has to be learned in the young age. But we are bombarded with material knowledge. We are bombarded with botany, zoology, chemistry, physics. And then we want to make career in our life. And then we feel very proud. I am the CEO of this company.
I am governing India. Then sometimes he says, oh, I am a corporate head, India head. Head में कुछ है ही नहीं. But he चले India head बनने के लिए. हाँ? He is working from morning till evening like a dog. One flight, another flight, another flight, another flight. Showing to the people, I am so busy. Chauffeur-driven car, mobile, not one, three mobiles. One for international, one for BV, and one for local. Because they have to articulate the words, whom to speak when, and through which phone. You know that? That's how they adore that person who is meticulously managing all these material energies, either emerging from a home or from the material world, but there is no connection with the spiritual world. That's why sometimes they get conked off at the age of 45. कौन चला गया, कौन चला गया? अरे रिलायंस में सीओ था, बेचारा मर गया यार, only 45 years में. पीछे क्या छोड़ दिया? रोता हुआ बच्चा, यंग पत्नी. Huh? But boss was fanning. You are so excellent, CEO. And boss is enjoying at his yacht in some ocean. Huh? And this donkey is working for him. Huh? This donkey and the person who is enjoying the yacht cruise, none of these people know the subject matter which can make them transcend this material world. That is why blind is hacking the blind. And that's why they are both suffering in this material world. But here, what is Prahlad Maharaj teaching us? Prahlad Maharaj is teaching, my dear friends, if you can place your faith in my words. This is Prahlad Maharaj saying, not me. And if you can develop faith while I am speaking, then you will come every Sunday here. Isn't it? Otherwise, you will be under the influence of material dandas outside the temple. And you will forget your relationship. But Prahlad Maharaj is telling here that you must learn this knowledge from a disciplic succession. He is guiding us. And so does Prabhupada, the great Acharya, is guiding us. Don't get deviated. Learn this transcendental knowledge from a parampara. And the same thing is Prahlad Maharaj is also saying. And why he is saying that? He says because I have heard it from Narada Muni. When I was just simply in the womb. And such is the power of this transcendental knowledge. Even if you are sitting in the womb of your mother, when you will come out, you will not fall the prey of this material energy which comprises of earth, water, fire, ether, everything. Otherwise, these things are going to completely wrap you up. You see? And you will not come to know the actually owner of this body. Desminitha dehi kaumaram yovanam jara tatha dehantar praptim dhirast tratra namuite. Out there, material world is making you adhira. All those endeavors, what you are putting in the material world, is going to make you adhira. Only the spiritual subject matter is going to make you dhira. And when you are absolutely in a dhira situation, not thinking that this body is yours, your actual is Atman, who is the resident of this body.
And not only that, when you see the companion of this Atman, Paramatma also becoming 26 owners of the body, some are material and some are spiritual. And if you fail to understand who are real spiritual owners of the body, and if you don't develop relationship with them, the possibility is that you will be engulfed by the nescience. And that nescience is going to bring you back to this material world. अज्ञानता के विभिन्न रूप ही आपके जीवन को इस संसार में इतना धकेल देंगे कि आपको आत्मबोध नहीं हो पाएगा. इसीलिए तत्वदर्शियों के आगोश में, भक्तों की संग में, शास्त्र के शरण में, गुरु के निर्देशन में आपकी आध्यात्मिक जीवन उज्जवल हो सकती है. Material knowledge, material education, material college, and material job is not going to make you transcend this material world. It can make your deha comfortable, but if you become too comfortable, you will not be able to come out of this dark well. आप इस अंधकूप से बाहर नहीं आ पाओगे. गृहस्थी का वातावरण, गृहस्थी का आवरण, वो इतना इस भौतिक जगत में धकेलने वाला है कि आप कभी भी उससे उठ नहीं पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे. Even if you have millions and billions of rupees, my dear friends, you cannot understand. I met yesterday one CEO of the company, CFO of the company. I will not name. The company owner wanted to give 25 crores for this temple. तालियां मत बनाइए, देने वाला था. आगे सुनो. मैं जानता हूं आप बड़े उत्सुक है मंदिर बनाने में, मगर जब मैं मांगता हूं तो उसी वक्त नानी मर जाती, चेहरा उधर हो जाता है. हाँ? This fellow wrote 25 crores check. And called us, come at 12 o'clock. 6 years back. Before COVID. But before we could touch the office at 12 o'clock, the Times of India had come with the big headlines. Coffee Puja or Black Cobra has completely finished this guy. He has exposed everything. So there are all EDs and this and that and everywhere in all the offices and everything. So the connection is finished. But the same CFO, after 5 years, I write an WhatsApp message. My dear friends, I would like to connect with you. Can you give me your birthday and this and that? So he wakes up after 5 years and he connects. Oh, Prabhuji,
is the same Prabhuji whom I was going to give on the boss's account 25 CR. But something happened to him. Paramatma is always guiding. Something happened because there's no connection, 6 years. So I want to connect with this man, like me. He immediately called, Prabhuji, I want to see you. I said, welcome. You're most welcome to come. And a sincere soul comes to the shelter of Lord, not the boss. Boss is in jail from the past 5 years. He was a sincere person. He came to the temple. So, the person who had played with billions of rupees, he could never understand the instruction of transcendental subject matter. Even if we will go to his house and give lectures at house, but he was so intoxicated with their own thing, he will not listen to the instructions of a sadhu. Or sometimes even they will ignore the sadhus, they will not meet. They think that this is not the agenda of their life. अभी मैं जवान हूं, भक्ति मैं बाद में करूंगा, है ना स्वामी जी? है स्वामी जी, अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं आएगा बाद में. मगर प्रहलाद महाराज हमको बता रहे हैं, ऐसी गलती मत करना भाई. कौमारम आचरते प्रज्ञो, ये तत्व ज्ञान जो है तभी आपको समझ आएगा अगर आप तत्व ज्ञानी के आश्रित में आ जाएंगे. This fellow, the CFO, he opened the Pindara of the whole thing, what had happened, because, we cannot connect with them, but you can see that he opened the whole can of worms. And he said, what not he did to come out of the jail. My dear friends, when you are in a pain, only you can understand what is the pain. He gave left and right money so that he could come out of it. And he gave money to A, Z, B, and those who are posing very sincere people. So what I mean to tell you is, don't get influenced when you earn money or when you have a beautiful house or beautiful wife or good children. Take it as a mercy of the Lord, but don't leave his lotus feet and don't leave the instructions of the saintly people. If you adhere to the saintly people's instructions, बड़ी सी बड़ी विपदा से भी आप बच सकते हैं. मगर अगर आपके दिमाग में संकेत नहीं गया तो फिर गटर में जाना पड़ेगा. समय समय पे शास्त्र और साधु हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये भौतिक जगत की एनर्जी और भौतिक जगत सब टेम्पररी है. हमें आध्यात्मिक जीवन में
प्रगति करनी होगी और सच्चे गुरु के आश्रित में रह के प्रगति करनी होगी। तभी जाके वो जो धन जो कमाते हैं, वो जो घर बसाते हैं, वो लड़की से जो शादी करते हैं, जो वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नहीं तो फूल खिल जाता है, कुछ समय तक बड़ा हो जाता है, फिर मुरझा जाता है, फिर खत्म हो जाता है। ये 6 प्रकार की चेंजेस आपके जीवन में भी आएंगे अगर आप इस जीवन को सही ढंग से भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। इसका कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। इसीलिए सतगुरुओं के, आचार्यों के इन इंस्ट्रक्शंस को तुरंत अपनाना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए यहां पर बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, Narada understood how to attain perfection in life by bhakti yoga. Yasya deve para bhakti yatha deve tatha guru tasyet kathita hi artha prakashanti mahatmana. Unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master. Srimad Bhagavatam, Svetaswara Upanishad 6:23. Those who have implicit faith in the Shastras and a bona fide Guru. If you don't have a bona fide Guru, never get clung to his feet, because you are not going to get absolute knowledge. You are not going to connect with spiritual world. There are many people who were connected in Bhagavad recitations and this and that. You ask them, what is your parampara? There is no parampara. This is only gratifying the senses with the pretext of taking the Bhagavatam or the Bhagavad Gita in their hands and trying to proclaim that they are the best teachers in the world. The best symptom of a best teacher is that he is ready to render menial service himself. Narada Muni, what was he doing? What was he doing? What was his life? He was pracharak, but at his home, when he started, he was the maid servant. He used to take otages of the great rishis. These rishis gave the blessings. Then he became Narada. He helped others to become wonderful devotees. If you don't have an influence, faith in these acharyas and render menial service in the temple, how can you purify your existence? That is what it is said here. Unto those great souls who have implicit faith. And in order to cultivate this faith, you have to keep on hearing. You don't have faith. Your faith is very shaky. Your faith is very weak. You have to fortify this weakness. You have to become stronger. You have to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You have to chant the holy name. You have to nurture your soul with this transcendental sound vibration. Your soul is encaged in these 26 masters. Some are real, some are fake. Isn't it? And you have to develop a relationship with the real master. Isn't it? Which we forget how to develop relationship with the masters. That's why we are suffering. Because these senses take us away from
real recognition that you are a servant, that you are an actual servant. But these senses are making you feel that you are the boss. When you engage these senses in sense gratification, and this can be A to Z sense gratification. When you have this attitude of gratifying your senses, never ever think that there can be a resolute rise of bhakti in your life. It is all Mahadpada Rajo Abhishekam. It's the only transcendentalist under whose lotus feet you cultivate real knowledge and hear, and that's how you'll be perfecting your life. अथा श्री कृष्ण नामाधि ना भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवाधो स्वयं एव सुपरते अधा. So Srila Prabhupada, the great Acharya, is telling us, don't wait for filmy songs to come on your tongue. Just chant the holy name of the Lord. Sevan mukhehi jivado. Chant now. If you don't have japamala, start now. Chant the holy name now. You are living now. You can believe in you. After death, your karma will denote your destination, not your father or your mother or the Modi ji or anybody. Your karma will denote what is going to be your destination. So change your destination, chanting the holy name of the Lord, reading Prabhupada's books, that will make you very, very important. One must have full faith in the words of spiritual master. The real knowledge of Atma and Paramatma and the distinction between matter and spirit. If you start knowing this knowledge, then you'll be helping on the path of divinity. Otherwise, this material energy, which is also of Krishna, can put you in illusion. And you will think, I'm always right. I'm always right. And here we see Prahlad Maharaj is extending his blessings to the classmates. Because they are demons. They didn't have an association of Narada Muni. But Narada Muni's association for Prahlad Maharaj was so potent that at the age of 6 only, he started preaching to his fellow friends. और हम क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब आपके पास आ जाऊंगा. अभी थोड़ा मेरा है ना, बच्चा है, बीवी है, उसके लिए काम करना पड़ता है. यमदूत थोड़ी छोड़ेगा आपको. मेरे को तो बोल दिया, मैं तो मान लिया, मगर यमदूत थोड़ी छोड़ेगा. वो बोलेगा देखो यमराज का चिट्ठा आया है, तुमने इतना गड़बड़ किया, इतना स्कैंडल किया, इतना घोटाला किया, इतना चीटिंग पत्नी को बोला, इतना चीटिंग बच्चों को किया. हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं. So that is why here it is said that you have to have a compassionate companion, a transcendentalist who can give you access to Krishna. If you don't have an access to Krishna, you have access to Maya. And who can take you out of Maya? A gardener who is sowing the seeds in the garden, my dear friends. He is the observer of the garden all the time. He is so much loving every plant. He knows how to take care of that plant very, very nicely.
He regularly goes early in the morning to the garden and checks all the shrubs and all the seeds, whether they have grown up. And he is seeing whether unwanted grass has not come around the real seed. He plucks it up early in the morning. He gives little more water to the growing plant. This is the nature of a gardener, to see that his plants grow very nicely in the garden. Likewise, the spiritual master is compassionate. He knows how to take out weeds out of your life so that your nurturing is done absolutely for understanding the transcendental knowledge, which can only make you transcend from the material world. And if that transcendental teacher is coming in parampara, you will definitely develop art of renunciation and you will become better devotee in your life. In Krishna consciousness, you take everybody along, but giving them real Krishna consciousness. That is the subject matter of a sadhu or a transcendentalist. We see here how Prahlad Maharaj is teaching his students, friends. So again, here he is mentioning Janamadi sad ime bhava drishta dehasya natmana phalanam iva vrikshasya kalaneshwara murtina. So this is the transcendental changes which you can see. Prahlad Maharaj is giving us this wonderful example. These changes, what you see in a flower, likewise these changes is going to happen to your body too. क्या है ये? Birth, existence, growth, transformation, dwindling, and the death. These changes will happen to you. But these changes happens to what? To the body, not to the soul. Soul is eternal, fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. But we are deflected. We are encaged in Maya Sansar. That is why it is said this body goes through, Madhvacharya says, Sadvikara sarirasya na Vishnu's tadgatasya cha tad adhinam shariram cha gyatva tan mamatmatyajhet. Since the body is the external feature of this Atman. Okay? Soul is not dependent on the body. Rather, the body is dependent on the soul. This you must understand. जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तब हम बोल रहे हैं, तब आप सुन रहे हैं. पेट में जो भी डाल रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है. तो आप इस आत्मन के एग्जिस्टेंस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जब तक आपके जीवन में अंधकार नहीं गूढ़ गूढ़ से भरा हुआ होगा. इसी अंधकार को निकालने के लिए गुरु का आश्रय लेना पड़ता है, नाम का आश्रय लेना पड़ता है, शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है, मंदिर का आश्रय लेना पड़ता है. क्योंकि सत्संग के द्वारा ही ये अज्ञान, विकृतियां, शरीर में उत्पन्न हुई विकृतियों को काट सकते हैं आप. खुद बंधे रहेंगे तो कौन छुड़ाएगा आपको? इन विकृतियों से आप बंधे हुए हैं. हाँ, रस्सी पास से बंधे हुए हैं. आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा. हाँ? जिसके पास ज्ञान का तलवार है, जिसके पास चाकू है,
कभी कभी हम लोग बचपन में छुपा छुपी खेलते थे, तो कोई 30 मार खान दोस्त होता था, वो छुपा छुपी में हमको पकड़ के रस्सी में बांध देते थे। तो कौन पता चल किधर गया किधर गया किधर गया, चिल्ला रहे हम लोग, अरे मेरे को इसने बांध लिया, मेरे को बांध लिया। अरे यार हम तो तुमको ढूंढ रहे थे, तुम किधर? अरे ये दुरूत है ना मेरा, ये मेरा दोस्त ने मेरे को बांध लिया यार, मैं निकल नहीं सकता, तेरा छुड़ा दो ना, मेरे को छुड़ा दो ना। खुद से नहीं छुड़ सकता था। हाँ? तो वो फिर आता था, गांड खोलता था। हाँ, तुमने क्या हालत बना दिया अपने दोस्त का। इसी तरीके से हम माया जाल के फांस में फंसे हुए हैं। दिव्य ज्ञान के तलवार से हमें इसको काटना पड़ेगा, इस चंगुल से बाहर निकलना होगा। दैट्स व्हाट प्रहलाद महाराज इज सेइंग। ओके, and we see Jivatma is conscious and Paramatma is also conscious. Okay? But Prabhupada ji is talking, Vedic Shastra is saying that we are surrounded by this material energy. And if we will not utilize this body in the service of Krishna, otherwise it can become a sign of nescience for us. It can become an ignorance for us. So that is why it is said that the individual, when he is in darkness, he thinks that he is this material body and that everything in relationship with the material body belongs to him. Huh? Isn't it? यही तो विडम्बना है ना। अरे माता लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? ये मेरा पति देव है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है। शाम को यहां पर खड़ा रहिए, उनको बोले थोड़ी देर मंदिर में रहने, अरे प्रभु जी मेरे को तो घर में जाना पड़ेगा ना। ऐसे भागते हैं। What is that? That is a symptom of ignorance. That's an अज्ञानता। यहां पर शाम को क्लास होता है, आरती के टाइम पे मंदिर भरा रहता, खड़ा होने की जगह नहीं रहती। क्लास में देखो तो 10-15 लोग बैठे रहते हैं। वो सोच रहे होंगे कि भगवान से हमारा रिश्ता हो गया, डेवलप हो गया हमारा रिश्ता। But in actuality, they are not fanning their dormant Krishna consciousness by nurturing it with Tattva Gyan. Srila Prabhupada facilitated Bhagavatam class, Bhagavad Gita class, so that we can hear and go back home, back to Godhead. Because our ignorance is so deep-rooted, our ignorance is so deep-rooted since many births, my dear friends. Fortunate are those people who have embraced the shelter, taken the shelter of the Bhagavatam and a bona fide Acharya. It is not happening by chance, my dear friend. It's because of the compassion of some devotee on you, and you adhering to the instruction of that compassionate devotee. And that cohesiveness among the listener and the hearer is a good substance coming out that you are transforming in your life. You are becoming a wonderful devotee. You are wearing tilak on your forehead. You have neck beads in your neck. You're chanting, you're inviting the Lord on the tip of your tongue by reciting loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
When you chant this mantra, you're going to get transformed. And especially if you get up at 2:30 in the morning, this Kartik month is so benediction on the Jivatma Prabhus. Just sometimes you get up at 2:30 in the morning and see the coolness, the atmosphere, the silence, and only your heart chanting the glories of the God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Your face becomes bright. You become blissful. You become happy. Why not? This is real happiness, my dear friends. This is not this happiness is not related to material things, what you have acquired in your material life. This happiness is because you are seeping in transcendental qualities, transcendental holy name, and transcendental prasadam in your body. And you are chanting with surrender and with a lot of love for the Lord. That is how He's responding to you. He responds to you. He is your friend. He is actual well-wisher. But unfortunately, we feel that he is my well-wisher, my patni is my well-wisher, my bacha is well-wisher, Modi is my well-wisher because he is talking to me man ki baat subah subah, और पता चला सुबह 1 घंटा चला जाता उसी में बहुत से लोगों को, है ना? संसारी मन की बात में मन अटक जाता है, उसको अच्छा लगता है, isn't it? अमिताभ बच्चन जब करोड़पति पे बैठेगा तो आपको बताएगा कौन बनेगा करोड़पति, तो आपको लगता है मैं भी करोड़पति एक दिन बन जाऊंगा. हाँ? पता चला 2 घंटा प्रोग्राम देख देख के अपना जिंदगी को बर्बाद कर दिया. ओके, सो मेनी गुड पीपल, बट 1 घंटा भागवतम क्लास में तो आइए, इसमें तो रुचि लीजिए. ये दिव्य ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है. भौतिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान आप उसमें रमे हुए हैं, मगर तत्व ज्ञान में कोई रुचि पैदा नहीं हो रही है. इसलिए मंदिर आना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, और ये नाम जरूर लेना पड़ेगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. And we come to second verse which Prahlad Maharaj is talking. He's देखिए Prahlad Maharaj is talking about the geologist. हाँ? वो 6 साल का ही बच्चे हैं, वो he is talking about the geologist. A geologist can know what is the difference between a mud and a gold. Where is gold, and by various processes can extract it from the gold ore. Similarly, a spiritual advanced person can understand how the spiritual particle exists within the body. हमारे अरविंद वर्मा जी नहीं है यहाँ पर, वो भक्त है, वो अर्थ में से देखते हैं कि पेट्रोल कहाँ पर है. नॉर्मल पर्सन को पूछिए क्या भाई तुमको मालूम है कि पेट्रोल कहां पर है, वो बोले प्रभु जी क्या बात करें, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है. Isn't it? The same thing is people who know where the gold is. The same Prahlad Maharaj is saying that one who is a transcendentalist, he knows where the soul is, what is the nature of the soul. Normal person cannot understand. And transcendentalist knows आत्मा और परमात्मा कहां पर विद्यमान करते हैं.
इसलिए यहां पर however as one who is not expert cannot understand where there is a gold, a foolish person who has not cultivated spiritual knowledge. मैं नहीं बता रहा हूं, हाँ? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जिस मूर्ख ने आध्यात्मिक ज्ञान को संचित नहीं किया है वो आत्मा के बारे में नहीं जानता है कि हमारे अंदर में आत्मा विद्यमान करते हैं। इसीलिए ट्रांसेंडेंटलिस्ट प्रभुपाद जी जैसे ज्ञानी हमको बता रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम भागवत गीता। और जब आप दूसरे ही चैप्टर में पूछोगे भगवान कितने हितैषी हैं, वो हमको बता रहे हैं आत्मा का क्या नेचर है और बॉडी का क्या नेचर है। Isn't it? बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं। ये तो भागवतम, ये तो नारद मुनि का प्रसंग चल रहा है यहां पर, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, हाँ? मगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी आपको बेसिक नॉलेज दे रहा है जो भगवान ने हमको तब दिया था और समय समय पे देते हैं। मगर हम मूर्ख जो है ये तत्व ज्ञान को नहीं पढ़ना चाहते, मटेरियल नॉलेज को गेन करने के लिए अपने जीवन के 25 साल बेकार करने के बाद 25 साल के ज्ञान का अर्जित किया हुआ जो समय है 50, 55, 60 साल तक चलाते हैं और चाहते हैं कि उसका कुछ रिजल्ट मिले। उस रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बाप ने 50 लाख 1 करोड़ रुपया चाहे इंजीनियरिंग में दिया होता है या एमबीए करने के लिए दिया है, उसको वापस लाने के लिए उसको ये फिर उस चक्रव्यूह में घुसना पड़ता है, जिस चक्रव्यूह में पहले ही गेट पे पत्नी मिलती है कि नहीं? यस नो? जब अब हो गया नौकरी, मतलब हो गया पढ़ लिख के अब तैयार हो गया, नौकरी मिल गई, तो पिताजी बोलता है छोकरी तैयार है? यस नो? पहले शर्माता है, नहीं डैड, नहीं डैड, है? या तू है तो कुछ बता, तो कोई है तो हमको बता, नहीं तो हम ढूंढेंगे। नहीं डैड, मैं I don't want to go. I don't want to get married. I want to serve you. Oh. फिर पिताजी बोल रहा, यार क्या है ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, रिश्तेदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे लोकलिटी बोले आपका लड़का बड़ा हो गया, कब शादी करोगे? मैं क्या जवाब दे दूं? मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। वो सोच रहे हैं कि शायद मैं ज्यादा दहेज मांग रहा हूं। दो चार साल हो जाते हैं तो डैडी डैडी, I have selected one girl. All these 4 years I was telling you to, I will select. No, Dad, I have selected. Okay, where is it? Where? Okay, you want to get married? Fine, great. Yes. This is the first gate of Chakravyuh. So you get married. Okay. Either a girlfriend or a boyfriend, whatever it is. You get married. What should I tell you? How crazy people are. Yesterday I was sitting in my office. ध्यान से सुनो आप. This is what is happening, especially those who are born after 80s, 90s. Their life has gone crazy. Isn't it? You're laughing. That means yes. This guy was next to my room. He was on the mobile. It seems from the discussion that his wife was in Chandigarh and she had left away. And he's pursuing.
और उसके 2-3 बच्चे हो गए होंगे. And he says that, I wanted to cultivate my children, but your father, you thought your father is very dear to you. I'm hearing in my office. मैंने सोचा मैं ऑफिस से बाहर निकलूं, उसको थप्पड़ मारूं, यार तुमको यही मंदिर मिला या सब डिस्कशन करने के लिए? And he was on the phone for almost about 45 minutes. He was frustrated with the family life. बच्चे हो जाएंगे, दूसरा पड़ाव. तीसरा उन बच्चों की शादी करना है. चौथा पड़ाव पढ़ाना है, शादी कराना. इस चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं तत्व ज्ञान के बगैर नहीं. They were completely mad, And sometimes you can see even the boy and girlfriend, they feel that Central Park is not for them. भगवान का मंदिर में ही अच्छा बैठेंगे. I really like you. I want to get married. Are you liking me? They don't know I'm sitting in my office. I'm overhearing all this nonsense all the time. You can see these wonderful stories, I'm going to write it in the book. And this is a practical demonstration of those people who are techies, who are completely young techies. They come to the temple, they have little sanskaras, they want to bring girlfriend to the temple, but actually they don't want to embrace this transcendental knowledge, because this transcendental knowledge will create vairagya. And this is what the modern child doesn't want. भगवान देता रहे और मैं इंद्र तृप्ति करता रहूं, ऐसा संपर्क चलता रहे, यही आध्यात्मिक जीवन का उत्तम प्रकाश है. पर एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन का उत्तम प्रकाश जो है, वैराग्य विद्या, निज भक्ति योगम. भगवत भक्ति में कितने आरूढ़ हैं आप, भगवत भक्ति में कितनी आसक्त हैं. जब आप भगवत भक्ति में संपूर्ण रूप से आसक्त होंगे, तब जाके ये जो परा तत्व जो है, जो हमारे शरीर से भिन्न है, जो हमारे शरीर हैं, इन तत्वों को आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं. अहंकार, ये सब इसमें जो बता रहे हैं, तब जाके यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं, भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अस्तधा. What is different from this prakriti, what is actual, Lord's energy, we'll be able to understand. Once we cultivate this transcendental knowledge, then only it is possible for us to become sadhus. Srila Prabhupada ji is saying at the end, when one understands all these 26 subjects, he becomes adhyatmavit, an expert in understanding the distinction between the matter and the spirit, as stated in the Bhagavad Gita, Kshetra Kshetragyo. So then, unless one ultimately understands that the Supreme Lord is eternally related with individual soul, one's knowledge is imperfect. One's knowledge is imperfect, and this is confirmed in, Bhagavad Gita, Bahunam Janmanam Ante. After many, many births, one who is in complete knowledge can come to my spiritual world. Srila Prabhupada says that ये प्रकृति ऐसी है जैसे कि आप चलते चलते आप फैशन गारमेंट शॉप में एक डॉल देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये डॉल अच्छी है, ब्यूटीफुल है, मगर उस डॉल में कोई जान नहीं है. मगर यहां पर क्या है कि ये जो पराशक्ति है, ये जो मटेरियल एनर्जी है, वो भी भगवान से बनाई हुई है, मगर हम वो भगवान से भिन्न है और हम भगवान के इस मटेरियल एनर्जी से प्रेम कर बैठते हैं और अपने अस्तित्व को उसी के प्राप्त करने में, संग्रह करने में खो देते हैं, और इस तरीके से हम संसार में लिप्त हो जाते हैं. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं that
when you are recording, for example, how do you understand what is Parashakti? He says that if you're recording your voice in the tape recorder, huh, that is your voice. If you play it, but that is your energy, but not you. When you hear this lecture on a recorded tape recorder, that's my voice, definitely. But when you hear that from a tape recorder, it's Parashakti. It's Parashakti. Para energy. But we get completely entangled in this Parashakti knowledge or whatever it is, and we forget our existence and we don't come to know who is the owner, who is the proprietor of this body. So, my dear friends, our basic education is that we are servant of the Supreme Personality of Godhead. We have to engage ourselves in His service, and that is how we'll become very happy. And the best methodology, Lord Chaitanya Mahaprabhu has given us in this age of Kali Yuga, chant the holy name of the Lord. Tukaram ji chants the holy name of the Lord. Srila Prabhupada ji made us to chant the holy name. Lord Chaitanya Mahaprabhu tells us to chant the holy name. And in this age of Kali Yuga, this is the best way of meditation, best way of connecting yourself with Krishna. And that's how Srila Prabhupada has been very, very powerful and successful spiritual leader all over the world, because he gave this holy name without any prize for it or a tag on it, but he profusely distributed this holy name. And that's how we have been transformed. That's how you will be transformed. That's how the whole world will be transformed, by chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I conclude here and ask for any questions or any comments you have or any suggestions you have. You are most welcome. वही तो हम बता रहे थे भागवत से, जो नारद मुनि बता रहे थे। नारद मुनि बता रहे हैं कि ये जो संसारी व्यक्ति है, उसको निर्लिप्त होना है संसार से, उसे दिव्य ज्ञान को अध्ययन करना है और दिव्य ज्ञान को सुबह शाम अपने जीवन में डालना है। और सबसे पहला जो गेटवे है इस कार्यक्रम में, वो है सेवन मुखे ही जीवा दो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अपनी जीवा को पहले नाम के प्रति पिरो दीजिए, और दूसरा कार्य है इसी जीवा से प्रसाद पाइए। जो इवन बड़े बड़े संसारी लोगों को, जो संसार में हैं, जिन्होंने बाकी सब कार्य भी किया, वो इस जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये दो चीज करो आप। एक तो जीवा से नाम स्मरण करो जितना हो सके, और इस जीवा से केवल प्रसाद पाओ। भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्राप्त करें। अगर ये चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली संसारी पना जो है आपसे छूटेगा, और आपका ये जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल बन पाएगा। आप क्या कर रहे बताइए? आप इनमें से दोनों में से क्या चीज परफेक्टली कर रहे बताइए? आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सो ब्रह्म मुहूर्त मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है।
ओके। कैलकाटा से। हम्म। हम्म। वेरी नाइस। तो फिर आपके जीवन में तो बहुत अच्छा चेंज आया होगा। यस। मगर एक चीज याद रखो, शायद सुना नहीं होगा किसी से आपने, बताओ, सबके सामने बताओ, अपने बाल को कलर मत करो आप। नो नो नो, ये देखो घंटी बजा है, यू टेक इट एज एन इंस्ट्रक्शन, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यस। नो 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 नो, जस्ट you see knowledge, no साहब, नो 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 नो, एक मिनट, ये नो नो नॉलेज, इसी, एक मिनट, क्या नाम है आपका बच्चा? नाम तो बहुत अच्छा है, गौरी, शंकर और नारायण, सब तीनों में है, मगर मगर अब सवाल ये है, गौरी शंकर नारायण प्रभु, अब सवाल ये है कि जितना भी आपने नॉलेज है ना, उसको इस्तेमाल करना है लाइफ में। अगर इसको नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज, समझे आप? अभी क्या है कि सब कुछ बोल रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे, अपनी आचरिते सिखाए। अगर ये नहीं कर पाओगे, अब जिंदगी भर और भी उस इतना लगाओ, कुछ चेंज नहीं आएगा विकारों में। अगर आप बोल रहे हैं ये आपके शरीर का रिक्वायरमेंट है, दिस इज अज्ञानता। इसलिए आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जप करना होगा। हाँ, सो इसलिए, मगर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि रेजर से आपका दाढ़ी साफ हो जाएगा, तो आपको अप्लाई करना होगा। मगर आप बोलेंगे कि नहीं, मैं रेजर को नहीं इस्तेमाल करूंगा, दाढ़ी बढ़ा दूंगा, दैट विल बी योर ओन कंकॉक्शन, नॉट शास्त्र's concoction. You have to apply knowledge now in any condition, because you want to resurrect from this material world, or you want to stay in this material world. If you want to stay in the material world, you have to become less body conscious. And these are all the symptoms of body consciousness. And till you don't develop art of renunciation, you will not be developing art of attachment to the lotus feet of Krishna, whatever it may. It starts from outside. It starts from outside. You are not this body. आप कंप्रोमाइज करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, तो हाउ दैट इज गोना हेल्प योर लाइफ? You are trying to misguide your own Atman. Don't misguide yourself. And leave it up to Krishna itself. He is going to show you the path. If you are sincerely under Guru, have you taken up Diksha? So this is my humble request, because समर्पण जीवन में आना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं आएगा, तो आपके जीवन में संपूर्ण रूप से स्वाध्याय भी नहीं आ सकता है, और सर्विस भी नहीं आ सकता। पहले किसी का सेवा करो, तब जाके आपका जो नॉलेज है और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा है, संस्कार अच्छे मिले हैं, अब गंगा के तट पे बैठे हुए हैं, संस्कार अच्छे मिले हैं कि गंगा जी के सर पे लेके घूम रहे हैं आप, वेरी नाइस। ये सीजन कभी कभी आता है जीवन में। आप देखिए, कभी कभी आप, anyway, I don't want to talk about that, but I just want to see, now you have a wonderful association of a real good sadhu, and then you will see this difference. And मेरे साथ आइए, थोड़ा सा बैठते हैं, हाँ, मेरे साथ उठिए थोड़ा सा 2:30 बजे, फिर ये कलर वलर सब कुछ निकल जाएगा, आपका चेहरा खिलाएगा बहुत भक्ति में। ओके, आप मेरे साथ में रहो, 1 महीना मेरे आश्रम, यहाँ पर आश्रम में रहो आप।
ठीक है, रहने के लिए तैयार? देखो देखो चेहरा बदल रहा है। ओके बस ठीक है। और मेरे को सिर्फ 1 महीना दे दो, जो मैं बोलूंगा करने के लिए वो करना है आपको। इफ, बट, किंतु, परंतु, कामा, फुल स्टॉप ये नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपको। ओके, वेरी गुड। सो फ्रॉम टुमारो श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की। हमारे भक्त क्या बोले उन्होंने? गौरी शंकर नारायण। वाह, क्योंकि ये तीनों में इतना पावर नाम है कि हम लोग भी अगर गौरी शंकर नारायण करेंगे तो हमको भी कुछ इफेक्ट मिलेगा। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।